forever. Watch out! Man, what the fuck? Looks good. Why, hello there. Have a seat. Teach you how to juggle multiple partners at once and blame your complete lack of morality and personal accountability on an addiction that doesn't exist. Pick up 13 steps to heaven today. You picking up what I'm putting down? This is some of my best work yet. I think. 1.1. Come back anytime. Please do not urinate on fellow passengers. I ain't struggling with pain. Hey, you just Hello. Make sure you come back. Enjoy your purchase. Here you go. Thank you. You won't find those anywhere else. Tell your friends where you got it. Make sure you come back. Just robbed me! What kind of amateur are you?
me it's good news. Here, man. Man, I'm a hypocrite. What a gentleman. And for once, I'm not being sarcastic. So you hard, huh? Man, you suck. Weak. Hey, get up! Is this really happening? Come on, homie. What? बड़े बड़े यहां पे बिजनेस इंडस्ट्री में लीडर्स हैं, जो यहां पे सिंगर्स हैं, जो यहां पे आर्मी में जनरल्स हैं, इंडिया में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, पुलिस में सीनियर लेवल पे हैं, इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स उनके हैं, वो सिख हैं। ये खालिस्तानी तो बहरूपिया हैं, कूड़ा करकट है ये। दे आर दी अपेंडिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको निकालने से नहीं फर्क पड़ेगा, है ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज डोंट कॉल देम सिक। जहां तक बात यह है कि हमारे रिलेशनशिप खराब होंगे, कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो भारत के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चाहता। डोवाल साहब ने ऑलरेडी यूके को समझा दिया है। अब डोवाल साहब जाके 3-4 देशों को और समझा देंगे कि देखो बेटा, साफ सीधी बात है,
अगर तुम्हारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, तो भारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जिस दिन हम लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। तुम तो पावर हो बिल्कुल, सिंपल सी बात है। पाव पाव कितनी पॉपुलेशन की है? 200 मिलियन, 150 मिलियन, 300 मिलियन, ऐसी तो इनकी पॉपुलेशन है। क्या है? एंड टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट? इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लोग आते हैं, लोग सलाम करते हैं, लोग इज्जत करते हैं। तो आप ये मत सोचना कि किसी से रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, ठीक है? सब रिलेशन, ये थोड़ा सा सेट करने वाली बात होती है। एक डोज डॉक्टर जयशंकर देंगे, ठीक है, एक डोज डोवाल साहब देंगे, मामला ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। दोस्तों, दूसरी खबर है, ये भारतीय सेना की खबर है, और ये खबर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। आपको पता है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारा बॉर्डर भी नहीं कहूंगा, इट्स नॉट अ बॉर्डर, इट्स परसेप्शनल इन नेचर, बट विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल्स, वहां पे इंडियन आर्मी ने धनुष होविट्जर हैं जो कि बोफोर्स के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो बोफोर्स से हुई थी उस पे बेस्ड है धनुष, उसको और मात्राओं में वहां पे डिप्लॉय करा है। दिस इज अ 155 mm स्टेट ऑफ द आर्ट artillery pieces which have been deployed, guns which have been deployed, and also the deployment of M4 quick reaction vehicles. ये M4 है, this is like an armored personal carrier type of thing which has been deployed there. ये काफी भारी मात्रा में भारत डिप्लॉय, देखिए ना, चाहे धनुष बन रहा है, राइट, चाहे M4 की वो है डिप्लॉयमेंट, ये भारत में दिस इज ऑल्सो, सी वी आर फेसिंग ऑफ अगेंस्ट चाइना, एंड दिस इज समथिंग दैट वी रियलाइज। हमें क्या रियलाइजेशन है कि भाई दे हैव टू बी मेड इन इंडिया। धनुष इज मेड इन इंडिया, राइट? M4 मेड इन इंडिया, मेड बाय प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है कि ये एक्सेप्टेंस है कि इंडियन आर्मी में, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, और वो वहां पे डिप्लॉय हो रही है। चाइना को पूरा प्रेशर दिया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं ना, अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि अमेरिका क्यों इतना वो कर रहा है, और क्यों मोदी जी को ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब क्योंकि इंडिया चाहता है कि अमेरिका, माफ कीजिए, चाहता है कि भारत चीन से लड़े। ओ भाई, भारत तो चीन से, जब अमेरिका कहीं हमारे रडार में था भी नहीं, भारत तो तब से लड़ रहा है। हमारी लेट 50s में उनके साथ खटपट शुरू हो गई थी, 62 में वॉर हो गया था, 67 में एक और झड़प हो गई नाथुला में, फिर अभी भी हो रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गलवान में क्या था, झड़प तो हुई थी। तो वी आर इन सच अ स्टेट, एंड डॉक्टर जयशंकर इज वेरी राइटली सेड दैट द बॉर्डर्स विल डिफाइन अ रिलेशनशिप विद चाइना। अगर तुम बॉर्डर गड़बड़ रखोगे तो रिलेशन तुम्हारे साथ गड़बड़ रहेगी, ठीक है? और फिर ऐसी बात नहीं कि इंडिया हिट बैक नहीं करेगा, ये तुम गलतफहमी मत रखना। ये दूसरा भारत है, ये नया भारत है, ये भारत हिट बैक करेगा, और भारत ऐसी ऐसी जगह से हिट बैक करेगा जहां से तुम्हारी चीखें निकलेंगी, ठीक है? और निकल रही हैं। जो ग्लोबल टाइम्स में एडिटोरियल छपते हैं ना, यू कैन कम टू नो वेरी इजीली कि चीन को कहां दर्द हो रहा है, कहां खुसफुसाहट हो रही है चीन में, ठीक है दोस्तों? तो ये M4 व्हीकल्स की हमने बात कर ली, और हमने बात कर ली धनुष होविट्जर की। इसके अलावा चंद्रयान 3, अब दोस्तों ऐसा है कि चंद्रयान 3 की बात है। चंद्रयान 3 आपको पता है लॉन्च होने वाला है, और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा, जाहिर सी बात है। एंड इसमें यह कहा गया है कि चंद्रयान 3 could result in a $1 trillion इकोनॉमी फॉर स्पेस। ये जो भारत का स्पेस का मामला है ना, चंद्रयान के बाद, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी फॉरन नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम ओनली स्पेस इट कुड रिजल्ट इन अ $1 trillion स्पेस इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। जिस तरीके से भारत स्पेस में, अच्छा भारत का ना स्पेस का मामला क्या है, अब नासा इज फार मोर एडवांस्ड, ठीक है, नासा इज फार मोर एडवांस्ड, इसमें कोई शक नहीं है। और नासा के जो सक्सेसेस रहे हैं तो दुनिया में अभी तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया। लेकिन क्या है ना, इंडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। इंडिया इज यूजिंग इनोवेशन टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। दो चीजें होती है ना धंधे में, राइट? एफिशिएंसी में आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी आ गई, आपका रीयूजेबल व्हीकल है कि नहीं, ये सब सारी 15 पैरामीटर्स होते हैं, वो 15 पैरामीटर्स इसमें आ गए, और लोअर कॉस्ट। तो जो चीज अमेरिका बनाता है मानिए 100 रुपए में, भारत वही चीज 10-15 रुपए में बना के पेश करता है, विथ सिमिलर लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी एंड सिमिलर टेक्नोलॉजी। तो ये भारत का, ठीक है ना, दिस इज आई थिंक इंडियाज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेस। वी हैव द फाइनेस्ट साइंटिस्ट, हमारे पास गजब के साइंटिस्ट हैं, और हम लोग ये काम कर रहे हैं। चंद्रयान के मिशन से क्या होगा, व्हेन यू लैंड दिस व्हीकल इट गोज टू द मून, ठीक है, ये चांद पे जाएगी। तो उसके बाद आप 2-3 चीजें देखेंगे कि ये है क्या मामला चंद्रयान का,
ठीक है, और इसके स्पिन ऑफ्स क्या होते हैं। बात ये होती है ना, लोग कहते हैं यार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है इंडिया, इंडिया का क्या मतलब है यार इतना पैसा खर्च करने का, वाई शुड इंडिया स्पेंड सो मच मनी इन स्पेस, यहां पे तो लोग भूखे हैं, ये है वो है, इतनी चीजें करने को बाकी है, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है 5th लार्जेस्ट हो गए, लेकिन अभी भी लोग हैं जो कि गरीब, बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है ये जो चंद्रयान है इसमें बैठ के अंबानी जाएगा ऊपर? चंद्रयान जब जाएगा ऊपर, दिस विल कैस्केड टू द कॉमन पीपल। ये जो हम बात कर रहे हैं 1 ट्रिलियन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से 1 ट्रिलियन है, किसके पास जाएगा? इसके पार्ट्स बनाने के लिए भारत में हजारों फैक्ट्रियां खुलेंगे, हजारों फैक्ट्रियों में लाखों, दसियों लाख, करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों का लेवल उठेगा, इकोनॉमिक लेवल उठेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है, और इससे क्या फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इंडिया किसी भी चीज में इन्वेस्ट करता है ना तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वंदे भारत ट्रेन क्यों बना रहे हो, उधर तो एक्सीडेंट हो गया उड़ीसा में। हर चीज एक साथ चलती है, ठीक है। अगर भारत सिर्फ ये कहता है ना कि नहीं नहीं सबसे पहले हम ये काम करेंगे बाकी सब काम रोक दो, ऐसा नहीं होता है। सरकार हर एक काम करती है, और एक साथ सरकार को काम मल्टीटास्किंग करनी होती है, वरना काम कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों यही बस छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था। एंड में मैं फिर से जो हमारे एनआरआईज हैं मैं उनको एक अपील करना चाहता हूं, राइट। आप लोग अपना फंड बनाइए, उस फंड को विदेश में ही रखिए, भारत में नहीं विदेश में रखिए। जहां पे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में इंग्लैंड, यूके का यूके बंदा रखे, यूएस का वहां पे रखे, और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है उस पैटर्न को आप फॉलो करिए, राइट। देयर आर मेनी एनआरआईज हु हैव गॉट माय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई विल टेल देम हाउ टू क्रिएट दिस वेबसाइट। वेबसाइट आपको खुद बनवानी है बाहर, मैं आपको बताऊंगा इस वेबसाइट में क्या क्या बनवाना है। आई विल टेल यू हाउ टू डू इट फॉर इट टू बी मोस्ट इफेक्टिव, राइट। एंड दिस वेबसाइट आई विल टेल यू हाउ द FBI शुड नो अबाउट दिस वेबसाइट। आपकी MI5 है, MI5 को इस वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, राइट। ऑस्ट्रेलिया की जो एजेंसीज हैं उनको पता होना चाहिए, कनाडा की एजेंसीज को उनके बारे में पता होना चाहिए वेबसाइट के बारे में। क्योंकि क्या होता है कि कनाडा को जो खालिस्तानी उनके वहां पे ये पगलेटों वाली हरकत कर रहे हैं उनको उनके बारे में तो पता है, लेकिन हो सकता है उनको ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पता हो। ये एक वेबसाइट है जो कि दुनिया भर के खालिस्तानियों का ब्यौरा बताएगी, उनकी इलीगल एक्टिविटीज बताएगी, ये वो दुनिया भर की चीजें क्या क्या है उनका, वो कहां पे रहते हैं, क्या करते हैं, उनके बिजनेसेस क्या हैं। जब आप खालिस्तानी की पेट पे लात मारोगे उसकी चीख निकलेगी, क्योंकि वो भारत को बदनाम करके, भारत के बारे में झूठ बोल के बाहर क्यों गया था? कनाडा। कनाडा क्यों गया था वो इसलिए गया था क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। तो वो बेसिकली एक खालिस्तानी इज अ मर्सनरी, आप उसका माइंडसेट समझिए दोस्तों, वो बेसिकली पैसे का भूखा है खालिस्तानी। वो भारत की नफरत बेच के पैसा कमा रहा है। अगर कल इनको पैसा मिलना बंद हो जाए भारत की नफरत पे, भारत से न्यूट्रल हो जाएंगे, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा प्यार करेंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो खालिस्तानीज आर बेसिकली मर्सनरीज, इनको जो पैसा दे दे वहां पे जहर उगलना शुरू कर देते हैं। इनका एवरीथिंग इज मनी रिलेटेड। जिस दिन आप लोग एनआरआईज आइडेंटिफाई कर देते हो खालिस्तानी बिजनेसेस, राइट, तब आप इनके पेट पे लात मार सकते हो। अक्रॉस यू हैव ड्रॉप डाउन्स, ठीक है, कनाडा ठक, ये खालिस्तानीज, नॉन खालिस्तानीज हैं, ठीक है। यूएस नॉन खालिस्तानीज, ऑस्ट्रेलिया नॉन खालिस्तानीज, दिस थिंग इन कनाडा नॉन खालिस्तानीज, जो भी नॉन 5-6 कंट्रीज में नॉन खालिस्तानीज है, आप उनका धीरे 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 बैंक बनाइए। और कैसे बनाएंगे? जैसा मैंने बोला, गेट प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स। पैसा आपके पास है दुनिया भर का, ये दुनिया भर के सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स और टेक जाइंट्स हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई आप ये करिए, मैं आपको बताता हूं, यू डू दिस, और आपको मैं बता रहा हूं विद इन 2 months आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, यू हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट कॉल्ड खालिस्तान वॉच, जैसे जिहाद वॉच है ना, खालिस्तान वॉच, और सम अदर नेम, आप खालिस्तान वॉच ना करें, ठीक है। तो के टेरर वॉच कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट बनाइए और उस वेबसाइट में धीरे 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 गेट 2 people, हायर 2 people टू मेंटेन दैट वेबसाइट, इंडियंस जो कि ट्रस्टवर्दी हो, एंड सीक्रेसी इज द की, एंड गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स। पता लगा
Gangsters are supposed to be seen as tough thugs with little regard for the law. But what happens when fake gangsters are faced with real prison time? I don't want to go back to jail, no dumb These are 3 never-before-seen examples of when wannabe gangsters realizing they'll be serving prison time. Starting with the case of 18-year-old Conrad Troja, who in September of 2010 was leaving school when he was approached by a man holding a handgun. Conrad was ordered to take off his bag and hand it over, but when he refused, he was shot in the chest by the man. Miraculously, Conrad managed to stumble away from the scene and call for help before collapsing and dying on the spot. The suspect fled immediately, but was later identified as Tavion Wilcox, who was brought in for attempted murder. But as it turns out, he wasn't all that tough in the interrogation room. Alright, here's the deal. You know something else happened. I don't sit here and talk to you without knowing what the deal is, alright? We've been talking to people, we've been interviewing people, we've been showing people pictures, we've been looking at video. I didn't bring you up here because you weren't wearing your seatbelt, okay? You got arrested for a burglary before and they didn't even bring you up here. Obviously, it's something a little more serious. Wilcox is trying to remain calm and pretend as though he's got no idea what this is all about. Little does he know, his getaway driver had also been apprehended and confessed to everything. Now the detective just has to find a way to get him to confess as well. This is going to go one of 2 ways. You're either going to be a guy who made a mistake, hanging around the wrong place, the wrong time, did something dumb, or you're going to be a guy that goes out and likes to shoot people for fun, okay? Listen, and before you say anything, I think you're a guy that made a mistake. I know you were there, okay? I know what happened. I've talked to the victim. The victims picked you out of a photo lineup and said, that's the guy that shot me, okay? Here's the deal. I don't think you shot that guy because you're a bad person. You didn't mean to kill that guy, okay? What happened is you were just trying to snatch his backpack, he started fighting with you, and you got scared. So y'all saying I shot somebody? I know you shot somebody. Imagine you're an 18-year-old kid who got in over their head and ended up shooting and killing an innocent civilian. No matter who you are, you'll be feeling scared. A feeling that'll only be amplified when a police officer asserts that they know exactly what happened. Wilcox will be feeling rattled now. As the cop talks, he's slumped over in his chair, implying he's interested in what the cop is saying, and as soon as he's allowed to talk, all his responses sound confused and even bewildered. The cop knows he has him on the back foot. Now he just needs to close it out. You're 18, right? You're 18, yes? Yeah. This is where you need to stand up and be a man and admit you made a mistake. I know you weren't trying to kill that guy. I know that, because you're not the kind of guy that does that. You panicked, you got scared, you got in over your head. The victim victim's making you out to be a stone cold, just straight up thug killer. Guy that doesn't give a about anybody else, alright? I could have stayed big late for this shit, man. If you keep going down the path you're going down telling me you didn't have anything to do with it, it's not you, who are people going to believe? Are they going to believe you or are they going to believe the victim? They're going to have to believe the victim because you didn't give me your side of the story. Wilcox is being pushed into a corner. The detective is using the facts that he knows Wilcox is just in over his head, but is using language in such a way that makes him feel like he's accused of being this cold-blooded monster. His reactions to this prove just how well this technique is working. He stares at the ground, implying shame, and rubs his head in a pacifying behavior that shows how stressed he is. A guy that sits there like you is not a guy that goes around and kills people. You understand what I'm saying? You have remorse. You're sorry. I can see it on you. You just need to take that next step. What happened in that parking lot? Did you guys plan it? Or did it just happen? Trying to back. Huh? Ain't trying to back. Damn, no. I can't. What'd you say? Ain't trying to go back to jail. Least of your concerns right now. Immense on how he absolutely can't go back to jail. The detective uses this moment of vulnerability to press him further and tells him he has one last opportunity to be honest and let everybody know that he isn't the monster they think he is. Did you say stop hitting me or I'm gonna shoot you? Anything like that? I was like, I had my hand like right here.
No, you had your left hand like up against him, Yeah. trying to push him away. I was trying to make him stop hitting me. Where was the gun? In my pocket. Which pocket? This one. How many times did you shoot? What happened after you pulled the trigger? Did he fall down or No, was he still standing up? Where'd you hit him? I didn't even know I hit him. Okay. So you fired that one round. What happened? I froze up. You just froze up? And just like that, Octavian Wilcox confessed to shooting Conrad Tohan and was sentenced to life in prison, all over a school bag. But while he'll be spending the rest of his life in prison, Demetrius Cox wasn't so lucky. Throughout the beginning of 2020, a war between rival gangs 438 and AFNF began to break out. Many shootings were reported, with dozens of deaths attributed to just these two gangs, with one of these occurring on the 14th of April. Shots were fired at a house party in Davenport, Florida, resulting in the death of 20-year-old Wolf Luma. The killer was identified almost immediately as Demetrius Cox, also 20 years old. 2 weeks later, Cox was brought in on the suspicion of murder, and an interrogation began, ending in one of the most shocking moments in interrogation history. Dang, dude. Sure, I do. You can say Mary? I can. And I didn't shake your hand before because we weren't able to, but now we can, right? Open and close. Yes, sir. Number one, I gotta tell you, I'm pretty impressed of the way just overall, your persona as it is. Yes, sir. So, I appreciate the respect. It's gonna be given right back to you, okay? Cox starts the interrogation out respectfully, but as the interview continues, he starts to annoy the detective by withholding information that could get members of his gang into trouble. This type of loyalty is extremely common in these types of cases, but can prove to work against you, as is seen just a few minutes later. I'm not saying you went there for the wrong reasons. However, man, I tell you one thing. You know how they say, like, victims, and suspects, things like that? I thought that you were a victim. Sure I am, but now y'all make it like I'm a suspect. No. I thought you were a Crazy. victim. I thought you were a victim, and I thought that you were gonna give us the justification, the explanation for what happened. Listen. But you come in here and you can't even with little details like that. Like, who cares? If Papa Jay's there, why can't you just be honest and say, yeah, he was there? He was chilling. We hung out. So, But I got another question what's for you. so like hard about the truth? What's interesting about this case, though, is that the cop actually isn't 100% sure that Cox is the killer. As Cox mentions earlier, most of the evidence in the case is hearsay, and detectives could have a hard time using it in court. This is why Cox is here in the first place. If they could extract a confession, it'd make their lives a whole lot easier, but Cox isn't budging. Okay, listen. If you want to tell me what happened, I'm all ears, man. I just tried to tell you what happened when we watched. Look at me in my face. Look at me in my face. You not. If you tell me the truth, I will believe you. But there's an explanation for what happened. So you trying to say I'm the explanation or something? I didn't even. You might have been. Eventually, the detective decides that he's not going to get anything else out of Cox and calls off the interrogation. But that's not where the case ends. In fact, the most interesting but tragic part happened just hours after the interrogation was held. Later that day, Cox was released on bail, but 11 hours later, he was shot and killed by another gang member. Meaning, if he had actually confessed, he just might have spared his own life, even if it was spending that life in prison. But while Cox may have kept it together in his interrogation and preserved his gangster image, the same cannot be said for Cody Forencam, a gangster whose crime was littered with errors and stupidity from the very start. After his phone was stolen at a convenience store, Cody went on a tyrannical rampage around his area looking for any signs of the stolen device. Surveillance footage captured him walking past 15-year-old Deshaun Hills, pulling a gun from his backpack and firing 3 shots at the boy, killing him instantly. Witnesses and surveillance footage helped police identify Cody